Hello everyone, you are watching Star Talk 2.0 ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨਾਲੀ ਵੈਲ I am back again with a new guest. I think ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. So this is for you. अदा तेवर और ना जाने क्या क्या, अदा तेवर और ना जाने क्या क्या, कत्ल का तेरे समान है और क्या. Thank you so much for such a beautiful introduction. Thank you. Welcome Akanksha, welcome to Star Talk 2.0. Thank you so much. It's a pleasure being here. Okay, thank you. Well, by any chance we are twinning today? Yes, black. Black. Yes. Okay, shall we start? Yes. Akanksha, tell me one thing. ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਤੋਂ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ Oh my God. ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ. Research, you know, all about research. You've done your homework. Yes. Okay. So I'll tell you, coming to acting was like a childhood dream, always. I always wanted to come on TV, I wanted to be famous, maybe little, maybe more, but I just wanted people to know me, I wanted people to recognize me. So I think around 10th or 11th class, I went to my dad and mom and I spoke to them. I was like, listen, this really interests me, I want to be on TV, I want to act, I want to be a heroine, I want to dance and stuff. So the initial reaction was like, are you gone nuts? Nobody from our family has gone into this business, nobody is in this profession. So the very initial response was not so accepting good of it. So ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ I used to try to convince them and stuff, and at one point I reached where he said okay yes ਕਰ ਲਈ. So I was like ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, I wrote it. मैंने कहा you know what should I do that after that आप मुझे allow कर दोगे? He's like become a chartered accountant. ये तो बहुत औखा, बट इतनी वो थी कि अगर ये करने के लिए मुझे पहले वो भी करना पड़े ना, इफ दिस इज द कंडीशन, मैं ये भी करूंगी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बनूंगी, मैं बहुत पढ़ाई करूंगी, बहुत मेहनत करूंगी. अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट क्लियर करके मुझे एक्टिंग में आने का मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी और परमिशन मिल रही है, आई विल डू दैट. मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बट आई वॉन्ट टू डू दिस. मतलब आई थिंक जब आप किसी चीज को इतना दिल से चाहो तो गॉड भी पूरी कायनात आपका पूरा साथ देती है. एंड मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई नहीं बनी, मैं कुछ नहीं किया, एंड स्टिल आई एम हियर टुडे. आई हैव डन सो मच ऑफ वर्क. सो आई थिंक यू जस्ट नीड टू बिलीव एंड यू जस्ट नीड टू एक्चुअली वांट समथिंग. अगर आपको कुछ भी बनना है ना, आपको दिल से उसकी इच्छा होनी चाहिए, एंड यू विल गेट इट. सो आई वेंट टू माय डैड, आई वाज लाइक मुझे ना यकीन नहीं हो रहा, आपने परमिशन दे दी है एंड स्टफ. लाइक पेपर पे लिखा, आई वाज लाइक साइन दिस. I got it signed from him कि उसमें अभी भी लिखा हुआ है, and I still have that paper with me at home. So it's written कि once I complete my chartered accountant thing, आप मुझे permission दोगे. So then he did a very नकली जे sign ना, but मैंने बैंक में उनके real sign देखे हुए थे. So I was like, you're very smart, you're playing smart, this is not your original signature. You do the original signature. मैंने legal paper चाहिदा. I'm not going to be played. So then he's like original sign. I was like, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. Exactly. But ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ process is a very difficult thing ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ process ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ what am I doing ਯਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ C ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ and then modeling, ਫਿਰ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, just ignore it and let's focus whatever I'm doing, because such professions ਨਾ ਬੜੇ accepted ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ in this society. Yes. So ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਮਨਾਣਾ was a very big thing. Yes. बट पता नहीं उस टाइम पे आप कह लो कि इतना पैशन था और इतनी हिंदी का वर्ड यूज़ करे, इतनी चुल थी, इतना मतलब अंदर से वो चीज़ थी कि कुछ भी करूँगी बट मुझे ये करना है. चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना पड़े, रिक्शा चलानी पड़े, ऑटो चलानी पड़े, कुछ भी करना पड़े, बट मुझे ये करना है. आई थिंक दैट्स वाई गॉड ऑल्सो got me here, and भगवान ने भी मेरा साथ दिया. Manifestation. अगर आप किसी चीज को दिल से चाहो, you will get it. Of course, that I also believe in that. Yes. Yeah. So Kanksha, what happens that ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ models, it's kind of tag. I personally don't like it, right? But obviously we have to discuss about it, ना. कितना difficult है. I am very sure it's a very common thing. सारे पूछते होने.
बट व्हाट आर द डिफिकल्टीज? सिर्फ एक को ग्लैमरस दिखना, अपना हमेशा स्माइल करना, बिकॉज आई कैन वेल इमेजिन समटाइम्स यू डू नॉट वांट टू सी पीपल्स फेसेस बट फिर भी ਤੁਹਾਨੂੰ हंस के दिखाना पैंदा आ। बहुत पेशेंस, यू नो, व्हेन 7-8 साल हो गए मैनू इन दिस इंडस्ट्री। इस तो पहला यू आस्क माई पेरेंट्स, आई वॉज a very impatient kid. I did not have patience. When I entered this industry, with time I learned patience, you know. इस इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, स्पेशली इन म्यूजिक वीडियोस, आपके पास सिर्फ 1 डे होता है टू फिनिश द इंटायर म्यूजिक वीडियो। 90% ऑफ द टाइम्स कोई म्यूजिक वीडियो होती है जिसका शूट 2 दिन का होता है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स 1 दिन का शूट होता है। अब 1 दिन के शूट में इतनी जल्दी होती है, लाइट जा रही है, शाम की सनलाइट जा रही है, उसके बाद डार्क हो जाएगा, हमारा सीक्वेंस कंप्लीट नहीं होगा, पैच वर्क रह जाएगा, ऑल ऑफ दैट। सो कई बार ऐसे भी होता था कि मतलब सुबह से पूरी धूप में काम कर रहे हैं, 4 घंटे एक सीक्वेंस चला है, उसके बाद आप अपनी वैनिटी में या रूम में जो भी आपके पास उस दिन होता है, आप आते हो, बंदे को लगता है 10 मिनट तो मैं सो जाऊंगी, अगले शॉट तो पहला। फिर उसी टाइम असिस्टेंट डायरेक्टर आ जाता है, मैम तुसी बैठ क्यों गए, छेती चेंज करो, अगला शॉट है, लाइट चले जानी है। उस टाइम पे ना अंदर से तो होता है कि 10 मिनट बैल दो, बट वहीं पे पेशेंस आती है। वहां पे आपको अंदर जो मर्जी फील हो रहा हो, मुंह पे आपको करना पड़ता है, हाँ जी आगे जी कर रिया जी। वहां पे आप अपनी इंटरनल फीलिंग्स नहीं शो कर सकते, बिकॉज देन दिल बी लाइक बड़ा एटीट्यूड है, बड़ी बदतमीज है ये आर्टिस्ट, इसके साथ अगली बार काम नहीं करना। एग्जैक्टली, नोबडी विल वर्क विद यू इफ यू बिहेव लाइक दैट। आपको जितना मर्जी, आई थिंक मेरे को बहुत, बिकॉज 8 years it has been, but then I want to interrupt you here, right? Yeah. Agar if you're not smiling and if you're rude to them, she's badtameez. If you're smiling, then she's easygoing. She's easygoing. Is it so? Honestly, बदतमीजी से मैंने कभी बिहेव नहीं किया 8 साल के करियर में। कभी हो गया होगा कि मेरी थोड़ी सी पेशेंस लूज हो गई होगी, कभी 1 या 2 शूट्स पे, वो भी जब बहुत हद हो गई होगी कि मतलब नॉट लाइक वेरी इजीली आई डोंट लूज माई पेशेंस, आई लूज माई पेशेंस व्हेन इट्स लाइक द लिमिट। सो अगर 1-2 बार ऐसा हुआ भी है, वो बदतमीजी नहीं मैंने की होगी, मैंने बस थोड़ा बोल दिया होगा कि मेरे को 5 मिनट लगेंगे, मैंने एटीट्यूड नहीं दिखाया होगा, मैंने बदतमीजी कभी नहीं की। तो इसीलिए मुझे डायरेक्टर्स और मेकअप आर्टिस्ट, मुझे बहुत लोग ये कॉम्प्लीमेंट देते हैं, आज तक देते हैं कि आप हमारे फेवरेट आर्टिस्ट हो। कहते हैं यहाँ पे आपने 500-400 सॉन्ग्स कर लिए हैं और आप आज भी इतने हम्बल हो, इतने आराम से डील करते हो, कभी भी पेशेंस नहीं लूज करते, इतना कोऑपरेट करते हो, 4 घंटे एक्स्ट्रा लग जाए आप कभी नहीं बोलते कि 4 घंटे क्यों एक्स्ट्रा लग गए, मैं जा रही हूँ अभी, ये वो, नो। सो दे लाइक यहाँ पे हमने ऐसी भी लड़कियां देखी हैं, 1 गाना कीता होंगे, 2 गाने कीते होंगे, 3जे गाने मेरे बॉडीगार्ड कहाँ है, मेरी वैनिटी कहाँ है, ये मैं इससे ज्यादा काम नहीं कर सकती। तो वो लॉन्ग लिव्ड नहीं होता है। वो आप एक शूट पे ऐसा एटीट्यूड दिखा लोगे, आगे क्या, आगे वो बंदा आपको दोबारा नहीं बुलाएगा, वो डायरेक्टर आपको दोबारा कभी नहीं बुलाएगा। वो उस दिन अपना काम निकाल लेगा क्योंकि अब वो फंसा हुआ है, उस दिन वो आपके टैंट्रम्स भी झेल लेगा, आपका एटीट्यूड भी, बट वो खुद और वो एटलीस्ट आगे 20 बंदों को बताएगा कि यार ਇਹਦੇ ਨਾਲ काम ना करियो, बहुत तंग कर दी। That's when you stop getting work। फिर वो कुड़िया घर बैठ के सोचती है यार काम ना क्यों बंद हो गया, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। Exactly। So these are the little things which you need to learn how to survive in the industry for 8 years। I have seen so many girls coming and going। 2 गाने किए, अच्छे गाने भी किए हैं, उसके बाद गायब, क्यों? Attitude problem। Okay, so that's how you survive. That's how I have survived for 8 years, and that is how I'm going to survive for the next 30-40 years। Because I'm sure कि मैं जब तक 60 साल की भी हो जाऊंगी, जब तक मेरी बॉडी में जान होगी, मैं बुढ़ी दादी के भी रोल करूंगी। मुझे इतना प्यार है एक्टिंग से। How sweet। अब एक चीज तुसी क्या भी, that's how you survive humble होके। ग्रुप्स भी बहुत ने, can you survive or you only can survive with staying in groups only? No। 8 साल हो गए मेरे को, मेरा कोई ग्रुप नहीं है इस इंडस्ट्री में। आई डोंट थिंक मेरी एक भी फ्रेंड बनी है ऑन अ पर्सनल लेवल। मैंने आज तक कभी किसी डायरेक्टर के साथ कोई पर्सनल बात नहीं, काम की बात, शूट के लिए कॉल आ रहा है, हाँ जी ये डेट है, ये गाना है, ये शूट है, ये टाइम है, पहुंच जाना, खलास। कभी मेरे को बहुत बार होता है, बिकॉज ये इंडस्ट्री ऐसी है, कई बार सिंगर्स भी बोल देते थे पहले
ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ फ्री हो ਆਪਾਂ बहने हैं ਆਪਾਂ कॉफ़ी पीने हैं नो मैं कभी उन चीज़ों में नहीं पड़ी है अब मैं उन चीज़ों से बहुत दूर रही हूँ काम से काम नो फालतू बातें किसी से कभी फालतू बात नहीं की जिस दिन काम है काम करो पूरा अच्छे से रिस्पेक्ट के साथ काम करो अपनी ड्यूटी निभाओ एंड कम बैक होम ना किसी के साथ फालतू दोस्तियाँ रखने की ज़रूरत है ना किसी के साथ वहाँ पे रिश्तेदारियाँ डालने की ज़रूरत है you are going you are working you're coming back home so it's very easy you don't need to have any groupism you don't need to have any friends to survive आपका काम बोलता है अगर जब एक्शन हो रहा है कैमरा में एक्शन और कट के बीच में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो आपको किसी की चुच्चू मुच्चू करने की ज़रूरत नहीं है आपको किसी के नीचे लगने की ज़रूरत है आपको किसी से काम मांगने की ज़रूरत नहीं आपका काम बोलेगा Exactly. But as we see in the industry now, there are only groups. Only Yeah. and only groups. And we feel like कि मतलब ऐदा कम चलता है चीज़ां ऐदा forward ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ना. So that's I think kind of difficult thing for newcomers or for the people out there ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ groups ਦੇ ਵਿੱਚ involved ਹੁੰਦੇ हैं ना. So I've seen you in many music videos. You were doing good. And of course you're right. I've never seen you with anyone. Never. Not even a single controversy. Not a single coffee I've had except for work. ना मैंने कभी कोई parties attend की हैं कभी होती भी होंगी इस इंडस्ट्री में मैंने कभी कोई पार्टीज अटेंड नहीं की कभी मैं किसी के साथ पर्सनल मिलने नहीं गई मैंने आज तक हमेशा नीट एंड क्लीन और डिसेंट वर्क किया है और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि मैंने 8 साल सर्वाइव किया और पूरी ज़िंदगी सर्वाइव करूँगी क्योंकि आई नो आई एम टैलेंटेड आई नो कि जब मेरे सामने कैमरा आएगा आई नो हाउ टू डू माई जॉब आई नो हाउ टू डू माई वर्क आई डोंट नीड टू प्लीज एनीबडी And how you see industry except you? The industry is what you are, according to me. Okay. If I am decent, I want to just focus on work. मेरे लिए वो industry है. जे मैं इदा दियाँ कुछ I don't want to say bad about anyone. Everybody has their own life. Everybody has their own choices. Nobody is bad in this world. Everybody has their own circumstances. हर एक दिए कोई situations ਹੁੰਦੀਆਂ life 'ਚ. So ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ blame ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. But I've seen some girls who try to please people, who try to do some extra stuff for getting more work. ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਦੋ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ because that was based on the extra things you were doing. That was not based on the work or your talent. So that's not going to survive for a long time. Exactly. And ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ you're very chill mode ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਆ ਰਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ as you're telling me that you're not going to please people and you've never done that. Never. So ਜਦੋਂ ਇਹ time ਹੁੰਦਾ ਆ for example you're done with the shoot today and you're going back and then long time you have no videos you have nothing you're just free. So what are those thoughts ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ I haven't shot मैं शूट नहीं किया फिर उस टाइम ये दिमाग से चलता कि ये चीज़ एंड एक्चुअली दिस इज द ट्रुथ कि ये इंडस्ट्री बहुत टेम्परेरी है दिस इज नॉट परमानेंट फॉर एनीबॉडी राजेश खन्ना वाज द बिगेस्ट स्टार ऑफ हिज टाइम ही वाज द किंग ऑफ द इंडस्ट्री प्रोड्यूसर्स यूज्ड टू डाई टू वर्क with him, to do films with him, to sign him. For 20-25 years he ruled. But जिस दिन वो अपने डेथ बेड पे सीगे किसी प्रोड्यूसर ने उन्हें एक मूवी नहीं बाई की Exactly. राजेश खन्ना. So that is the reality of this profession. This is the bitter truth. You accept it or you don't accept it. You stay in the fake world. But truth is that this industry is very temporary. ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਿਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਊਟੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉਰੇ ਪਰੇ ਹੋਇਆ it is fluctuating. It is not permanent. This is what I have realized about this industry. I met a lot of people, a lot of artists like you. They don't accept the fact. Yeah. They'll just say, "Kam kar raha, sare changa kam kar raha." Obviously, they don't want to put themselves in a controversy. Yeah. But nobody says that this is something temporary. This is temporary. I say that, and I have experienced it, and it is the bitter truth. And everybody knows it deep inside, but nobody wants to accept it. But this is the reality. As you're doing work with gaps, so कभी उस gap ਦੇ ਵਿੱਚ realize ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ यार maybe मेरा time ਸੀਗਾ I was doing well and something like thoughts like आंदे ही आउदा थे
ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਗੈਪ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਟਸ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਏਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੈੱਟ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡੀਓਪੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਫॉर 8 years ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਰਿਪੀਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਸ਼ੂਟ ਤੇ ਉਹੀ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਡੀਓਪੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਹੀ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵਿਹਲੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਹੋ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਫਲੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਲਾਈਕ ਆਈ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਟੇਕਨ ਅ ਗੈਪ, ਆਈ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਲਾਈਕ come off the graph. I always make sure कि मेरा graph इदा होवे, at least stable रहे या ऊपर जाए, कभी भी थल्ले ना जाए। So उस चीज़ में मैं हमेशा maintain करके रखती हूँ। That's great. And ये होता है कि या तो एक especially female actresses ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਖੋ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। So if I ask you, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂ ਗੈਟ ਮੈਰਿਡ, ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਆਈ ਲਾਈਕਡ ਇਟ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਯੂ ਰਿਵੀਲਡ, ਐਂਡ ਵਿਦ ਦ ਫੈਕਟ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣਗੇ ਕਿ ਅਰੇ ਸ਼ੀ ਗॉट ਮੈਰਿਡ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। देयर आर पीपल लाइक दैट, देयर आर पीपल लाइक टेल मी अबाउट दैट। मैंने अपनी शादी को खुले आम पब्लिक किया एंड हमेशा करूँगी। वाई? इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਐਕਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਐਨੀ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਆਈ ਮੀਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਅ ਸਟੂਪਿਡ ਥਾਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੀਕਨਸੀਵਡ ਨੋਸ਼ਨ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਤੋਂ ਨੋ ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਆਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਕ ਬਿਫੋਰ ਮੈਰਿਜ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਆਊਗਾ ਸ਼ੂਟ ਲਈ, ਤੇ ਸ਼ੂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹੋਗੇ ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ? ਵਾਈ? It's like any other profession. I love my job, I love my work. Why will I stop working just because I got married? Marriage is a process of life. ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ। These are stages of life. How does it have to affect my work? So this is a very, I don't know, this is a very rubbish preconceived notion. I think people need to understand that marriage is not the end of your career. And this is happening with everyone. Kareena Kapoor also said in her interview that people told me ki you are at the peak of your career and you're getting married, तेरा हुन career खत्म हो जाएगा. She's like, I don't care. जे मतलब मैंने अपनी जिंदगी sacrifice करनी पवे, like मैं व्याह ना करावा हुन, like don't I have my own life? Even when you're not married, don't you have relationships before? Does ते उदो थोड़ा काम बंद हो जाता नहीं हुंदा? So how does marriage have to affect your work? Exactly. And I am very much working. I'm working उतना ही जितना मैं शादी से पहले काम कर रही थी. So but I'm just saying कि कुछ लोगों के अभी भी इंक्वायरीज आती है और वो पूछते हैं कि आप काम कर रहे हो? हमें तो लगा था अब आप काम नहीं कर रहे हो. So how does it matter? How does it matter? क्यों नहीं करूँगी काम? Exactly, exactly. Also, short de vich, I really want to know your love story. My love story. I am so keen to know love stories. मुझे बड़ा मजा आता है. Okay, so my husband Bishek, we met on a shoot. Okay. On a shoot itself. So they are jewelers, and we were doing a shoot. I went to do a shoot with Rose Creations Ludhiana. Brand shoot. Yeah, brand shoot, and they were doing the jewelry for that shoot. So he was there, his mom was there. And उस time पे तो कुछ नहीं हुआ, but later on, I don't know, through some situation we got in touch again, and you know उस time पे when I saw him for the first time, बहुत कम होता है लाइफ में ऐसा कि you know हम रोज कितने लोगों को देखते हैं, कितने लोगों को मिलते हैं, but you never get that feeling, oh wow, like this guy is really nice. So when I saw him for the first time, he was just standing there, and I was like, wow, कितना decent, कितना humble, कितना अच्छा लड़का है यार, ऐसे का partner चाहिए मेरे को लाइफ में. तो तब सिर्फ एक thought था, but later on I think
few months down the line we got in contact for some reason and related to work only I think. वहाँ से we just became friends and उस time पे हम friends ही थे but धीरे धीरे you know we just spoke थोड़ा बहुत but ऐसे कुछ नहीं था कि we were like talking a lot. ऐसा कुछ marriage का तो सोचा ही नहीं था. But this year only 2022 we just spoke once or twice and we were like let's talk to our families ek baar. And we both spoke to our families spoke to each other and everything worked out and we were more than happy. How sweet. So that's how it is. How very sweet. Simple love story. Very sweet and I've seen he's you know full support from his side. Full support. He is more supportive than even my earlier family was. Oh. Actually ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੁੰਦਾ and ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਕਰੂੰਗੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਓਗੇ. ਸੋ ਨੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਈ and ਮੈਂ ਇਨਫੈਕਟ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ being a simple girl I had thought कि हाँ मैंने 7-8 साल काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, आगे करने की इच्छा है, मन है, दिल है, पर डेफिनेटली विद पहले भी अपनी फैमिली के सपोर्ट से किया है और आगे भी वैसे ही करना है क्योंकि अगर फैमिली का सपोर्ट ना हो मज़ा नहीं आता. तो आप जो भी लाइफ में कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आप किसके लिए कर रहे हो? यू डू इट फॉर योर फैमिली, यू डू इट फॉर everything around you. You don't do it for your individual self. अगर मेरी फैमिली खुश नहीं होगी, आसपास कोई खुश नहीं होगा तो उस काम का कोई फ़ायदा नहीं है. तो मैंने यही सोचा था कि शादी के बाद I'll speak जो मेरे पार्टनर बोलेंगे, जो मेरी आगे वाली फैमिली बोलेगी वैसे करूँगी. And I'm like, I was shocked, you know. शादी के कुछ 10-15 दिन बाद, you know, my sister-in-law, Abhishek's elder sister, she is also a working girl and my mother-in-law is a working woman. She works, she goes to the store every day. She is a complete working woman. So क्योंकि वो खुद काम करते हैं उनको काम की वैल्यू पता है. Exactly. उन दोनों ने मेरे को बोला, मम्मा ने and नेहा दी, my sister-in-law, both of them told me that you know अब शादी हो गई है तो ये मतलब नहीं कि काम छोड़ना है, हम पूरा सपोर्ट करेंगे, तू दिल खोल के काम कर. And my husband, everybody in the family has been so supportive. I'm like thankful to God. मैं रोज सुबह उठ के I thank God कि मुझे इतनी अच्छी family मिली. Touch wood for that. And obviously we are looking forward for the films. So I've seen Bajre Da Sitta. You won't believe your कुछ seconds का वो कहते हैं ना एक artist के लिए कुछ seconds important होते हैं. दिखाना है तो उसमें दिखाओ. I got goosebumps. Trust me on that. I mean, I was just like, wow. I'm talking to you. I'm getting the same right now. I'm listening and I'm getting goosebumps. I loved your performance. And then I realized I'm gonna interview this girl very soon. Wow. Yeah. That means from there it started. Wow. I loved your performance in that. Wow. And trust me, I am looking forward to see you in such characters. I want to do a lot more movies. I am now focusing on doing movies. Of course, my genre is music videos and I will continue doing music videos forever. But I also really look forward to doing films now, to doing feature films, web series, short films, OTT platform films. I want to do a lot of work because I know I can and I'm capable of it. So I want to expand my vision. I want to expand my work. I don't want to stick to only music videos. I want to do everything. I want to do everything related to acting. So I'm very, very keen. And Bajre Da Sitta was, जब मेरे को लो रोल आया, I was like कि ये चाहे 7-8 मिनट का रोल है, बट मैंने एक अमिताभ बच्चन की इंटरव्यू में सुना हुआ था कि चाहे आपको पूरी फिल्म में 2 मिनट का भी काम मिले ना, आप उसको इतना अच्छा निभाओ कि लोग पूरी फिल्म में आपको याद करें कि हाँ वो इंसान काम करके गया था. I tell you, मैंने एग्जैक्ट तो याद नहीं है, कुछ ब्लरी याद है. I think थोड़े कुछ scenes different से के, but when you came initially with your kid है ना, till the end I was waiting कि ओ कुड़ी कब वापस आओगे, because I want to see that part of the story. Wow. I swear I'm not lying. I was waiting that when will she be back, and then पता लगूगा climax से का scene. I was waiting for that. Yeah. So see, that's what you have done. And I did not act. I actually did it.
I actually felt the emotion. मैं उस चीज़ अपने आप ਨੂੰ actually उस situation 'ਚ ਪਾਇਆ कि कल ਨੂੰ मेरी कुड़ी होवे and she's about to die and I'm her mother. How will I feel? ਉੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ fake acting ਕਰਦੀ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ. Audience ਨੇ connect ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ. I actually felt it. I actually felt कि how is the feeling of losing someone whom you have given birth to, or somebody who is so close to you, somebody who is a piece of you. Exactly. How will it feel to lose that person in front of your eyes? वो आँख के सामने उसने like she stopped responding. Exactly. So how will a mother react? एक मम्मी एक माँ के सामने उसका बच्चा ऐसे बैठा हो लेटा हो not responding. उस माँ के ऊपर क्या बीतेगी. मैंने वो ही वहाँ पे रेप्लिकेट किया. एंड आई थिंक जब मैं प्रीमियर पे गई थी और जब मैं बाहर निकली आफ्टर द फिल्म, मैंने देखा खुद आंखों से भी देखा और मुझे लोगों ने भी बताया कि पूरी फिल्म में कोई रोया नहीं था. एवरीबडी टोल्ड मी कि जब आपका वो सीन आया ना हम रो पड़े. Exactly. Like people actually. I'm getting goosebumps right now. So am I. So I think मेरी मेहनत सफल हो गई वहाँ पे. अगर आपको कोई ये कॉम्प्लीमेंट दे दे, मेरे पास एक फोटोग्राफर आया लड़का, very हट्टा कट्टा, very like muscular boy, you know. And मतलब उसको देख के कोई ऐसे वो जिम शिम जाता होगा, बड़ा हट्टा कट्टा एंड वेरी स्ट्रॉन्ग बॉय होते हैं ना, वैसे फोटोग्राफर था बट वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी. He came to me, he's like आकांक्षा मैं ना कदे किसी ਨੂੰ ਇਹ compliment ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ but ਮੈਂ ਕਦੀ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਰੋ ਪਿਆ. Oh God. He's like amazing performance and all of that. I think that for me was the win. I was like doesn't matter मेरा रोल 6 मिनट का था 8 मिनट का था, अगर मैं capable हूँ कल को ज़्यादा भी होगा but at least मुझे जो opportunity मिली, जितना time मिला मैंने अपना best किया और वो लोगों को अच्छा लगा. My job is done. What was the reaction of your family? Everybody was so happy. Everybody was so proud of me. Everybody was like, wow, you deserve a lot. You know what my husband says to me? कभी कभी अगर मैं 0.1% demotivate हो जाती हूँ ना, you know what he says to me, my husband? He's like, तेरे में इतनी capability है ना कि I see you at Neeru Bajwa's place in the next 5 years. Oh my God, and that He's is like, it. you have it. You just need to put it out. Exactly. And he sees that potential in me. So I'm like, wow, I have not seen that potential in हमें नहीं पता हम खुद क्या है, क्या capability. I don't know. But he told me this. And I was like, what? What are you saying? No, I don't know. But all I know is कि मैं बहुत मेहनत करूँगी, जितना मेरे से होगा मैं करूँगी. मैं चाहे यहाँ हूँ, I don't care. Success does not get to my head, nor does failure. That is more ना important. मैं success से वो होती हूँ, ना मैं failure से डरती हूँ. I just want कि मैं life में कभी भी 20 साल बाद regret ना करूँ कि मैंने वो चीज़ करनी थी but मैंने कोशिश भी नहीं की. मैं fail होके आ जाऊँगी, मैं खुश होंगी, चलो मैं ट्राई कराई, मेरे अंदर रिग्रेट नहीं है, मैं फेल होके आ गई जी, बट एटलीस्ट मेरी लाइफ में रिग्रेट नहीं होना चाहिए. Exactly. That is more important. Yeah. Also, I really want to know कि ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ but ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਰੋਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਚੁਲਬੁਲੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਜਾਂ whatever you want to do? Yes, of course I want to do those kind of roles, but one dream role, like something like a dream role would be Alia's performance in Highway film. Oh yeah. That was deep. That was not like, you know, comedy films hundiya, normal films hundiya, romantic films hundiya, everybody can do it. You make me dress well, you give me good clothes, you make me a modern woman, I do good makeup, hair, and I come out, that's fine. But ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਹੁਤ deep act ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ on the screen and actually ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ relate ਕਰ ਸਕਣ. Exactly. And I have one more story to tell you. So there is, I won't name her exactly, but somebody very special. मेरी जो अब family है खन्ना में, उनके बहुत close है. तो I don't want to name her because उनकी personal life है, so I don't want to bring that on screen. But she lost her daughter. Okay. There's one woman. She has 2 sons now, but she had a daughter and she lost her daughter. And she's also a singer.
So Bajre Da Sitta, the exact story, like Bajre Da Sitta also something like Something that. like Singing that. के related भी थी Exactly. तान्या के point of view से. चलो मैं उसमें Yeah, समझ mother. नहीं. But the love for singing and the point of losing a daughter, being a mother. Okay. So that woman, when she met me, she came home one day and she's like, Akanksha, ਜਦੋਂ मैं movie देख रही थी ना and तेरा role आया, she's like मेरे आंसू टिप 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 टिप, she's like मैं एक emotion feel कर सकਦੀ ਸੀ and ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ I lost my daughter, she was like ਉਸ time exactly ਇਹੀ emotion ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹ same to screen ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ. It was so real. She was like ਮੈਨੂੰ I could relate to it. So I was like my God. So doing something like that, किसी की real life को, किसी की real situation को, something which is so deep, अगर आप उस चीज को screen पे ला सकते हो, there is nothing more meaningful than that. Exactly. Yeah. So I'm so happy, but at the same time I feel कि people like you, artists like you, है ना, I think आगे आके space देना चाहिए because I know you. I think ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ that what kind of a person, What kind of a right? You get the energy and I the get vibe. the energy, Yeah. vibe and everything. I know you will never go look at the picture and beg and sit in the groups and No. say ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦਵੋ, right? Never. You will never do Never. that. But at the same time, it is kind of bad feeling कि यार people like her need to Yeah. get more work, है ना? Yeah. And ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਉਹ ਖੁਦਾਰਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਕੇ ਮੰਗੂਗਾ भी नहीं काम. मैं नहीं मांगूंगी. That's what I'm saying. मैं 2 महीने घर पे बैठ जाऊंगी बट मैं काम मांगने कभी नहीं जाऊंगी. I think I really want to say this on air कि बहुत ਵੱਡਾ loss है industry ਦਾ if you lose such people. Oh no. There are a lot of people. I know a lot of people like you know, that. I actually had this thought process कि मैं कਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ reach out नहीं करना, कਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ नहीं मांगना, but मैं with time, you know, you evolve as a person. मैं प्रियंका चोपड़ा दी एक recent interview देखी, हुने 3-4 दिन पहले ही देखी, and उसमें she said she was Miss World and she ruled the Bollywood industry for so many years. She's Priyanka Chopra. She left the Bollywood industry and she went to Hollywood in 2010, right? So when she went to Hollywood, she was like, वहाँ पे मुझे initially जाके इतना काम नहीं मिल रहा था. I had to literally knock on people's doors and I had to literally ask for opportunities. And then 10 years after, I got my first leading role, and she's Priyanka Chopra. So I think वो जो मेरे में ego problem थी ना कि I don't have to like That is reach out to self-respect. people. And also my partner Abhishek, he taught me this, that इसमें कोई ego नहीं होती है. That is self-respect. Yeah, that is self-respect. So now as a person, I am evolving. I am letting go of some think, yeah, preconceived thinking and notions. So yeah. I think it's good, but at the same time, I'm saying it is a loss. It is actually a big loss. Yeah. I am telling you, I have just seen you as a model, but trust me, being an interviewer, I've seen the film and I was like, I will definitely interview her and see it happens. Wow. I told you that, and see, this is happening today. I feel so good that we sat together, and I think ਤੁਸੀਂ screen ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ and you start judging a person. Yes. That is bad. I think Once you sit down with somebody, even for 10 minutes, you know, you can actually feel the energy, you can feel the vibe, you can actually and get we to connect know. since day one. Yes, you can actually get to know how this person Exactly. is. Exactly. Until unless you don't meet someone, you keep thinking what you want to think. Exactly. But after this conversation, I really want to say it was lovely, lovely, lovely meeting you. And of course, I really want कि interview बहुत लोग देखन, and I think उस तो बाद कुछ ऐदा दा हो जाए. Manifestation we were talking about. Yes, manifestation. So all the very best, Akanksha, Thank and you. I'm looking forward for the characters जो भी तुसी करना चाहते हो, and I'm also waiting, and I'm very sure that they बहुत लोग ही होंगे जिन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ उस छोटे जे रोल च देखा and they were like, we want to see her. Yes, I'm sure. Very And you soon. will see me, for sure you will see me. Of course, as you said, मैं बुढ़ी भी हो जाऊँ, पर जब तक मेरे में जान है, मैं 60 years की होके निर्मल ऋषि वाले रोल भी करूंगी. मैं दादी अम्मा का रोल भी करूंगी. That is the love and For that is the acting. passion I have for acting. I just cannot let go of it. I will do it and I'll do it till the day I breathe. How sweet. Yeah. Thank you so much and all the very best. Thank you so much. It was lovely talking to you. Same here. Thank you. ਸੋ ਇਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਕਾਂक्षा ਸਰੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ
and I really want to see her coming in films because मैं बहुत बेसब्री नाल इंतज़ार कर रही हूँ, especially after this conversation. And also thank you so much for watching us. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ Star Talk 2.0 with me Sonali. Stay tuned for more updates.